Just a quick round of introduction. I'm Anil Sharma from IPO Central. I am the co-founder and manager of this website, this IPO platform. We focus primarily on IPOs in India, and we have been doing it for the last 10 years. Uh, yeah. And Great. so a lot of retail folks come on our website to get our unbiased views and accordingly subscribe to the IPOs. Yeah, so with that, I hand it over to you. Yeah. So let me introduce you myself. I'm a founder member and chairman and managing director of Omnitech. I'll give you one, background. I have done my graduation mechanical engineering and I have worked hand on a machining aspect. So I was doing my first job was a Jyoti CNC automations, and there I have joined as a graduate trainee engineer. So my salary start was a 4,750 rupees before million years. And we deal into the precision engineer machine product along with the assembly, testing, and giving the end-to-end warehousing solution into the United States. We serve primarily, four segments. One is the energy segment, second is the motion control and automations, industrial equipment, and some of other industries. So in the energies, we serve into the, like oil and gas and some of new energy, other divisions, wherever, like renewables and similar industries, there we are serving. So last year's our revenue growth and everything was good, and we handle up to a 5 microns of precision levels. So our business model is working with a large OEM customers where our all the product are getting fitted into their OEM, original equipments and service providers and like that. So in terms of longevity, repeated our business, so we have around more than 80-90% of the repeated business historically with these types of large OEM customers. We handle a diversified product portfolios. We make very few gram of the parts to 500 kg of the parts, and probably in a 5 to 10 meters of the jobs we handle. So whenever we have to provide more value additions or assembly and testing and similar, so ideally the main body or anything on the assembly, main mother part is always having a large dimensional geometries. So we handle from small to a large product also. So in terms of, we have a strong order book, which is around 1,700 crores, along with the backed by our repeated business, which is more than 90% of the business. In terms of, overall, we work in different segments. But apart from that, we have also in our strategies, we are also growing into, defense side and aerospace side of the business. So defense has been already initiated. We have, start receiving some sample orders from that side. So our if you see our revenue spread, there is diversified in around 35 to 40% from one segment, in another two and three segment is around 60%. So we are our growth and revenue is quite sustainable. And historically, we have been, growing with a very good growth rates, along with maintaining our strong EBITDAs and cash flows and everything. You know. Okay, great, wonderful. So, Uday Kumarji, if you could just help us understand who exactly are your clients in terms of industries? Which industries do you supply to? Yeah. So we in energy segments, we have like Schlumbergers and Weatherford and similar. We have customers which are multi-billion dollar of customers, which are Hmm. having thousands of peoples and strength on their manpowers and like that. So they are all OEMs and service providers to the different energy side of the business.
in the motion control and automations and industrial equipment where there are many few good customers like Oscos. They sells into the airport ground support equipment, and similar we have some of our push industries, and there are many of the customers. So we have more than 220 customers globally Okay. and exporting to more than 22 countries. Hmm. Okay. I believe over 75, nearly 75% of your business comes from international markets. Yes. Yeah. Yes, Anil. Okay. So I just wanted to understand, how did you chance upon this? Let's start from the beginning. Like, what prompted you? How did you get into this business? Or was it your background, or was it some sort of connects you developed in the industry? What exactly happened? So basically, like after my engineering, I have worked in a Jyoti CNC who are making primarily CNC machines. So there Mm-hmm. I have started as a graduate training engineer. So we call as a technical know-how. Mm-hmm. So all the technical know-how in the Jyoti, my roles and responsibility was applications department. So there I have, from the customers who buys the machines, I have to give a complete processes and, statistic process control and all the, applications, cost for components and return on ROI models to the customers. So there I have got that knowledge. And once upon a day, we thought ki, we are working on this, but if we can make us some good business models, so less than 1 lakh rupees of the equity, we have started this business. So initially we were doing a, subcontracting job work for some companies. So there we have started initial, you can say like first year, there will be probably, few lakhs of our sales revenues, and step by step we enter into the OEM market. Like, many of the OEMs are located in India. So we have start working with the OEM. There are different locations, and there are so many quality standard requirements, certification requirement. So we have one Mm-hmm. philosophy we call as we like to follow our customers. So, we call as Mm-hmm. one of our core value is a customer centricity. So if customer, suppose हम लोगों को, yeah, customer can give us the visions where they want to take us. Yeah. इनिशियली एक कस्टमर से चालू किया, धीरे धीरे हम लोगों ने 2008 में फर्स्ट ओईएम ऑन बोर्ड किया. We have taken several ISOs and safety standards and everything. In 2009, early late 2008, we have started a first export into United States step by step. In international market, हम लोगों ने 2010 में फर्स्ट OEM इंटरनेशनल कस्टमर्स क्रैक किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स. फिर Mm-hmm. धीरे धीरे रेफरेंस से रेफरेंस बनते हुए हम लोगों को और कस्टमर मिला. बट Wonderful. so हम लोगों के जो most beauty of our business is since 2008, some of customer we have developed, still we are working with those customers. So it's, Yeah. the trust of our customer on us, that is making us always waking up. How can we be with the customer for a very long 10 years? And ये Mm-hmm. सब customers में there is a global approval कि like there are multi-billion companies, so उसके काफी सारे ventures रहते हैं कि वो लोगों के भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोस रहते हैं. तो हम लोग उसके बाकी के जो सेगमेंट्स है उसमें भी हम लोग धीरे धीरे एक्सपांड करना चालू किया. इन Mm-hmm. 2015 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने एक और प्लांट बनाया जो अभी मेटोडा में है. फिर धीरे धीरे ग्रो करके वी रीच टू दिस लेवल्स. Okay, great, wonderful. तो आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया ये बिजनेस? या दैट रफली वाज इन 2008 या या उससे पहले शायद? या अच्छा. ओके. 2007. 2007. 7. 7. ओके. Wonderful. This is very good and very exciting also. Hats off to you. थैंक यू सो Uh, मच. yeah. So उदय कुमार जी, अभी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह कहाँ पे है? कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है? इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज. So, our main capacity is in terms of machine hours.
So Mhm. our capacity is measured by the machine hours. So presently our utilization is around 70% of that machine hours we are presently averagely utilizing. Month on month, there may be a small, up and down or something like that, because we also always wants to have a growth trajectory. So some capacity we have that available to grow our customers very quickly. And Right. with the IPO proceed, also we are adding our another two new plants. So it will again increase our significant capacities to serve our order book and our existing customers. हम्म। ओके। राइट। और अभी बात करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योति सीएनसी का भी कुछ टाइम पहले ही आईपीओ आया था। सो हाँ, हाँ, यस। उसका 2 साल हुआ शायद, या अंदाजे से। राइट हाँ राइट या। जनवरी में कुछ आया था। हाँ यस। हम्म। सो आपके लिए तो ये एक तरीके से काफी नॉस्टैल्जिक मोमेंट रहेगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका भी आईपीओ आया और अब आप खुद आईपीओ लेके आ रहे हैं। हाँ, like every milestone have a different trajectory, you can say strategy to grow. So so now with the equity we are anticipating further growth and like that. So that's what our intentions. राइट। तो ओके, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव साइड के बारे में बात करेंगे कि Yeah, yeah. आपकी ग्रोथ अभी तक बहुत ही इम्प्रेसिव रही है। वंडरफुल ग्रोथ यू हैव अचीव्ड। अगर मैं देखूं अभी तो आई थिंक आपने बिजनेस ऑलमोस्ट डबल कर लिया पिछले 2 साल में, फुल ईयर्स की बात करें तो। और इस साल का जो 6 महीने का रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो कस्टमर बेस है वो है ऑयल एंड गैस एनर्जी वर्टिकल, Hmm. राइट। एंड काफी मार्केट एस्टिमेट्स ये इंडिकेट करते हैं कि अब पीक ऑयल वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हो चुकी हैं। सो प्रोबेबली वहां पे उतनी रिक्वायरमेंट अभी ना रहे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन रिन्यूएबल्स पे ज्यादा फोकस है एनर्जी प्लेयर्स का। ये आपके बिजनेस मॉडल को किसी तरीके से हैम्पर करता है या आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं? Yeah, so first of all, it's a very good questions. Right. In the overall, around 40% of roughly, 35% comes from around, this is a high level tentative numbers हम्म from oil and gas. But now in coming to the oil and gas, we are more on to the, you can say, operation and maintenance side of the business. And we have a very diverse portfolios, okay, like in the oil and gas have also the different business lines. हम्म Like drilling is a very less in our business portfolio, but our more business is on the surface side of the business, and they call it a production system and similar side of the business. हम्म। And that's what we are seeing, that like we are having a good order books from those segments. And energy demands are pretty growing into that markets. So according to our order books and everything, there are pretty expected growth in that categories also. हम्म। अभी आपने कहा कि आप एक्सप्लोरेशन साइड पे ज्यादा आप बिजनेस नहीं करते हैं, ज्यादा आपका जो बिजनेस है वो सरफेस साइड पे है। तो जहाँ पे क्या अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, तो क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? Yeah. So recurring business model है. Exactly. You use the अच्छा। perfect word. ओके। Yeah. राइट। ओके। मैं एक्चुअली समझना ये चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या एक सॉल्यूशन के तौर पे आप एक वेंडर हैं अपने कस्टमर्स के लिए? नहीं, हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. So we are ओके। our all business model is a B2B. You हाँ, know, कंप्लीटली बी टू बी है। जी। completely B2B. Yeah. So हम राइट। लोग उसको प्रोडक्ट देते हैं, बट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, that is being done by our teams. So that ओके। is our IPO of our business. वो कंप्लीटली आपके पास है, यू ओन दी Yeah, आईपी? yeah, ओके। राइट। yeah. और स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो हैं वो आपके कस्टमर्स बताते हैं कि हमें वो इस कस्टमर बताते हैं. स्पेसिफिकेशन।
ओके, Yes. गॉट इट। राइट, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स में आजाद इंजीनियरिंग और यूनिमैक, आई थिंक यूनिमैक ही था शायद, हाँ, यूनिमैक एरोस्पेस को मेंशन किया है। ये दोनों ही एरोस्पेस इंडस्ट्री को केटर करते हैं, लेकिन और आपका शायद जो है ऑयल एंड गैस और दूसरे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह इस पे ज़्यादा फोकस है। तो एक क्वालिटेटिवली मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों इंडस्ट्रीज में, आपके कॉम्पिटिटर्स की इंडस्ट्रीज में और आपकी इंडस्ट्री में? So basically, there is no qualitative difference, but it is हम्म। more about different company have initially started some segments and eventually they go enter into in different segments. So they are certain they are more into that segments and we are growing in that segment. So this is but qualitative, it is, all are, qualified ISO customer suppliers and peers and all are, so if you see the industry standards, so it is the same at par, except a very few certifications. Yeah. ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे आपके यहाँ पे जो अप्रूवल्स वगैरह होते हैं कस्टमर से, वो आपको गेन करने में, लेट्स से आप किसी नए कस्टमर को, नए कस्टमर ने आपको अप्रोच किया, या आपने उनको अप्रोच किया फॉर बिजनेस, तो आपको कितना टाइम लगता है कि आप उनके रोल्स पे आ जाएं, आप उनको सप्लाई करना शुरू करें? Yeah. और एक टिपिकली ये प्रोसेस कैसे रहता है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करें प्लीज। So basically, these large OEMs are more work on first they start exploring some good suppliers, then they start entering, offering some, NDAs, non-disclosure agreements, and there are so many processes, and then they start taking some sample cores, and if there is a consistency and they validate the course with terms of capability which has to be in-house capabilities, and they evaluate our all the skill levels and machinery infrastructure measurement equipment processes certifications, capability to handle the diverse materials like a titanium, alloy, inconel, and experience of handling that material. That type of initially there was so much detailed conversations about questionnaires. Then they start first doing the quality audits, safety related audit, ESG audits, sustainability audits. There are several, depend on the customers, they have several audits, and they some give us some notes of some corrective actions if there is some gap and like that. And after that they first give us a small sample orders, and then once you get it approved, that sample orders, normally making the samples is also around 2 to 4 months and like that, depend on the samples. And then once they approve the samples, in many of the samples they have a valid, they have an endurance test, they have a testing on the samples. So sometimes it takes a 2 to 6 months of the validation time. So once there's everything goes good smooth, then they start ordering a first order. So it in general, a high level, it's depends on customers, but anything is start from the eight, something on a, you can say 7 8 months to 20 months, 24 months of the horizon, depends on the product line and depends on the customers and depends on the safety criticalities and everything, you know. ओके, ओके। तो आपको 6 महीने से 18 महीने तक का टाइम लग जाता है? हाँ, लग जाता है। ओके, राइट, ओके। अब थोड़ा फाइनेंस के बारे में बात करते हैं सर। आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो थोड़े से नीचे आ गए हैं, हम्म। ऑल्दो अभी भी काफ़ी हेल्दी लेवल पे हैं, लेकिन हाँ। हिस्टोरिकली जो रहे हैं वहाँ से नीचे आ गए हैं। क्या आप इनको यहाँ पे स्टेबलाइज होते हुए देखते हैं, या हाउ हाउ डू यू सी? नहीं, डेफिनेटली दे विल स्टेबलाइज इफ यू विल सी कि जो 24 में जो हमने कैपेक्स वो सब किया था, तो उससे हमारा जो डेट जो है और जो इक्विटी है वो बढ़ा था, तो उसके सामने जो मेरे रिटर्न्स थे वो थोड़े कम थे।
तो उसकी हिसाब से वो थोड़ा भी कम थे, पर जैसे जैसे बोला कि भाई फॉर एग्जांपल के इफ यू विल सी इन द FY24, तो मेरा जो 178 करोड़ का जो टर्नओवर था, और FY25 में जो मेरा नया प्लांट बना है, तो उसमें वो रैंप अप हुआ है, मतलब वो, और ये साल में भी रैंप अप हो रहा है। तो जैसे जैसे वो रैंप अप होगा, तो मेरा जो रिटर्न्स और ROCE वो बढ़ रहा है, मतलब वो। तो वी आर एस्टिमेटिंग इन नेक्स्ट 2-3 years विद अ गुड स्टेबल रेशियोज फॉर दैट थिंग। ओके। और आपका डेट इक्विटी भी थोड़ा सा हायर साइड पे है अभी। FY25 में 1.6 था। और ये आपके इशू ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेंशन किया है कि आप कुछ अमाउंट जो है अपना बोरोविंग्स को तो कम करने में यस, यूज तो लॉन्ग करेंगे। टर्म, या जी, तो आईपीओ के बाद में आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? कि अभी मेरा जो डेट इक्विटी रेशियो है लास्ट ईयर वो 1.65 टाइम्स था, तो अभी भी मेरा वो स्टेबल ही है, मतलब वो। तो IPO प्रोसीड से जो मैं पे कर रहा हूँ वो थोड़ा कम होगा, पर ऑल ओवर आप देखोगे तो इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 टाइम्स रहेगा, मतलब वो। ओके। एंड हिस्टोरिकली आपने इसी रेशियो के साथ काम किया है? आप कंफर्टेबल हैं इस रेशियो के साथ? हाँ, उसमें क्योंकि नाउ सी वी आर ऑल्सो रेजिंग द इक्विटीज, और हमारा डेट भी रहेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम हमारा ग्रोथ करने वाले हैं। ओके। And adding राइट। to the, company is generating a pretty handsome cash flows, so that is also giving the, इंटरनल एक्रूवल्स तो intellect आएंगे। accruals and राइट। राइट। सो राइट। आपका बिजनेस काफी स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। यहाँ पे आपके आई एम श्योर और भी कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे इस फील्ड के अंदर। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कितने वायबल हैं? ये आपकी कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेकिन इन जनरल मैं समझना चाहता हूं कि प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर कितना वायबल होता है। so again it's a very interesting question. So it's a merger and acquisitions are possible with having a strong team of the company transformation teams, and cultural alignment of the acquired companies, which should be a gel with the existing business, and existing cultural values, existing customer values, existing business values, and everything, then it is highly possible. राइट। राइट। ओके। तो आप इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप तो काम करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। ऐसा कुछ कंसोलिडेशन आने वाला है इंडस्ट्री में, या आप इंटरेस्टेड होंगे कि हम ग्रो करने के लिए जो है हाई ग्रोथ कंपनीज को अक्वायर भी कर सकते हैं? आप इस बिजनेस आइडिया को लेके कितना ओपन है? So in our as per DRHPs, and we have one of a strategy we have mentioned that in that. So in futures depends on the values, and what are the uh, overall value of that proposals. We may think, or because sometimes some certain product lines, and we can reduce some of like initial development time. So there may be, we have mentioned that is one of our strategies. राइट। राइट। सो फ्यूचर की अगर बात करें, लाइक यहाँ से आपको लेट्स से आने वाले कुछ सालों में आई एम श्योर आपके भी कुछ प्रोजेक्शंस होंगे। मैं स्पेसिफिक नंबर पे नहीं जाऊंगा, बट लेट्स से 5x आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। जस्ट जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर। आप अपने बिजनेस को 5x ग्रो करना चाहते हो, तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू सी? ये आपको कंस्ट्रेंट्स कहाँ आएंगी यहाँ पे? So it's a very interesting question, but you can say, like, over the historically 18-20 years, what are the learnings and growth to reach that milestone? If we, keep, lesson learned into implementing on the new trajectory. So राइट। I think some of are the very common, things. So some of are very, there is one phenomenon, what brings you here won't take you there. So करेक्ट। some of करेक्ट। the एब्सोल्युटली। philosophy will be a same,
but some of the Mhm. new adaptability we have to take it, like in terms of digitalization. So, we have our, all the factories are industry 4.0 connected, because whenever there is a scale is there, we should have a data capturing very, smooth and accuracy of the data. So there are so many, system related, so many transformational activity we need to carry it out in the organizations. So we are doing that, like many of. टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके बिजनेस को काफी इम्पैक्ट भी करेगा वो? Yeah, so we have a good robotic lines in house, and that हम्म. similar you can say, there are many different ways we have to adopt to doing for that 5x journey. ओके. अभी एआई को लेके काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं. ये कुछ ऐसी चीज है जो कि आपका कुछ एक्सपीरियंस है इसमें, आप कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में? आईओटी आपने अभी, सॉरी, आपने इंडस्ट्री 4.0 जो मेंशन किया, तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे एआई काम में आ रहा हो? So in our industry also it will be very helpful. So in हम्म. terms of taking the decision making and making repeated decisions into more AI based, but not taking a complete decision, but it will be again it is a doer and checker. So validation will be required by the peoples, but you can say, हम्म. like just example, we have many of the dashboard coming from the systems. So some of the dashboard and interpretation of the dashboard AI can give us, but at the end of the day we have to have a person driven strategy ki what is to be understood from that dashboard. So AI will Right. shorten that overall time spent on making those types of decisions. Okay, great. Okay, finally, one question I have around pricing of the IPO. आपने 25 के फिगर्स के बेसिस पे अगर मैं पीई रेशियो की बात करूं तो करीब 53, हायर एंड पे 53 के आसपास पीई रेशियो निकल के आता है, और आपके जो 6 महीने के रिजल्ट्स हैं उनको एनुअलाइज करने के बाद ये पीई रेशियो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी 50 के ऊपर ही है. तो ये मुझे लगता है कि काफी हाई साइड पे आपने प्राइसिंग की है. आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स आपकी कंपनी के अच्छे हैं, ग्रोथ है, वो सब ठीक है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी इन सब के मद्देनजर भी ऊपरी स्तर पर नजर आती है. So basically, like our BRLM has done, they are doing, we have a two BRLM and they have suggested some of, strategies. But, whatever our historical growth journeys and whatever our, investment on the primary side onto the business. हम्म. So that, that level, so overall, we are there into with these pricings. ओके. ओके. फेयर इनफ. आप ये कह रहे हैं कि बीआरएलएम जो है वही जिम्मेदार हैं इसके लिए, सो No, no, पॉइंट that वेल that's टेकन. I did not say like that, but you can say it's a more joint and mutual, overall things. But if you जहाँ पे see peers जहाँ पे का, उनको डिमांड नजर आती है, इस so प्राइस पे उनको peers, डिमांड नजर आ रही है. हाँ, वन ऑफ द थिंग्स मैंने जो मेंशन नहीं की है वो ये है कि आपने जीरो डाइल्यूशन रखा है. अभी तक कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे नजर नहीं आया. सो आप कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं. शायद 5% के करीब आपने कुछ अपने इन्वेस्टर्स को शेयर किया है. यस. इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक हैं, आई डोंट नो, क्योंकि उसकी डिटेल नहीं है आपके आरएचपी में. बट या सो दैट इज अ कमेंडेबल थिंग, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते, इस स्केल तक आते आते यूजुअली डाइल्यूशन हो जाता है. सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट. एंड मैं आपको मेरी अग्रिम बधाइयां देता हूं आईपीओ की सफलता के लिए. ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द आईपीओ. ऑल द बेस्ट. Yeah, thanks a lot thank for you, taking out time and talking to us. I wish you all the best once again. Thank you. thank you, Thank you. thank you Thank you so very much, much. Anil ji. Thank you, Anil.